आसमान में उड़ना हर किसी का ख्वाब होता है और कुछ फॉर्चुनेट होते हैं जिनका ये ख्वाब पूरा भी होता है. Metaphorically, we all fly in air, we all fly in the sky. However, literally, very few get an opportunity to fly high in the sky. Hello everyone, welcome to another session on career coaching. I'm your career coach. So as I was talking, that we all desire to fly high in the sky, very few make it a reality. वो जो इसको सच्चाई में कन्वर्ट कर पाते हैं उनको हम कहते हैं फ्लाइट अटेंडेंट. फ्लाइट अटेंडेंट से कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मैम क्या बात कर रही हैं. चलिए, लेट मी मेक इट इजियर. एयर होस्टेस, कैबिन क्रू, ये शब्द तो आपने सुने होंगे ना. तो फ्लाइट अटेंडेंट हो, चाहे एयर होस्टेस हो या कैबिन क्रू हो, मीनिंग सबका एक है. पहले के जमाने में ओनली फीमेल्स यूज्ड टू टेक अप दिस जॉब, व्हिच इज व्हाई दिस जॉब वाज कॉल्ड एज एयर होस्टेसेस in plural or singular air hostess. However, as time advanced with modernization, even boys aspired to fly high in the sky and be a part of service industry. Yes, my dear fellow viewers, it is a part of service industry where you need to have very good communication skills, very good public speaking skills. So then what happened? The term was changed and it was framed as flight attendant or flight steward. The meaning, once again, let me tell you, is the same. So what is a flight attendant? A flight attendant is responsible for ensuring that all of the passengers on a flight are following safety rules. They are responsible for cleaning the airplane and taking care of customers. All the requirements of a passenger who is traveling on board, who is traveling by air. A few of the main duties of a flight attendant are scheduling cleaning up after a flight, complying with airlines regulations, instructing passengers on safety measures and assisting passengers when needed. कुल मिलाकर के जो भी ज़रूरत है, खाना चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, पिलो चाहिए, कभी कभी फर्स्ट एड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कोई और असिस्टेंस जो कि डूएबल है, प्रोवाइडेबल है, विच इज़ नीडेड बाय अ पैसेंजर, इज ऑल प्रोवाइडेड, सर्व्ड, गिवन बाय अ फ्लाइट अटेंडेंट. छोटी छोटी ज़रूरतें से लेकर के बड़ी ज़रूरतें जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है पूरा करना ऑन फ्लाइट, वो एक जिम्मेदारी है फ्लाइट अटेंडेंट. Comfortable ho travel, the journey is comfortable, that is the lookout of a flight attendant. They also have to prepare reports whenever there is an incident in the aircraft. कभी कोई ऐसी घटना हो गई जो कि अनप्लेजेंट है या अनएक्सपेक्टेड है, तो उस पर प्रॉपर रिपोर्टिंग भी फ्लाइट अटेंडेंट का ही काम होता है. Some of the job titles that a flight attendant could grow into are pilot and air traffic controller. आगे चल करके आप इन जॉब्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं. Career as a flight attendant goes back to 1912. This is when the job of a flight attendant, or then known as air hostess, started, when only women chose the field. However, over the past few years, men too have also been known as stewards or air hosts, and females as stewardesses or air hostesses. Who does a flight attendant report to? कौन उनका सीनियर होता है, कौन उनका हेड होता है? Let us understand that also. Flight attendants usually have a flight attendant coordinator who supervises their entire team and ensures the employees are following the proper flight guidelines and policies. If flight attendants have any comments or concerns about their role, they will speak with the flight attendant coordinator who will work to resolve the issue. अगर कोई प्रॉब्लम है तो फ्लाइट अटेंडेंट अपने सीनियर, अपने कोऑर्डिनेटर से बात करता है, और फ्लाइट अटेंडेंट कोऑर्डिनेटर का जॉब होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन कंसर्न्स या फीडबैक को एड्रेस करना. During the flight attendant must report and
follow instructions from the pilot to ensure a safe and comfortable flight for everyone. Not just the flight, the landing, the ascent, the descent, everything that is a part of the flight has to be taken care of by the flight attendant. Overall journey has to be peaceful, comfortable, is again the lookout of a flight attendant. What type of airlines can flight attendants work for? किस तरह की airlines हैं जिनके लिए एक flight attendant काम कर सकता है? The two main types of airline flight attendants may work for are first commercial and then second is private airlines. Commercial flight attendants work on larger airlines providing assistance to coach, economy plus and sometimes first class passengers all at once. एक फ्लाइट है उसमें सेक्शंस बने हुए हैं और अलग अलग सेक्शंस की अलग अलग चार्जेस भी होते हैं, अलग अलग एयर फेयर भी होता है और उन सब की देखभाल करना एक ही टाइम में किसका काम है? फ्लाइट अटेंडेंट का. They often perform common flight attendant duties like assisting with stowing, carrying on luggage, ensuring all passengers are safe and comfortable during the flight, and responding to any immediate medical or safety issues that happen on a flight. आपने सुना होगा कि कभी किसी को हार्ट अटैक आ गया या कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको कोई क्राइसिस हो गई, उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, उसको देखना, ये सारे काम आपने कई बार सुना भी होगा कि द बेबीज आर बोर्न इन एयर, फ्लाइट में ही फॉर सम रीजन अ बेबी इज बोर्न. इट्स नॉट कॉमन बट येस इट हैज हैपेंड. तो ये सारा ट्रेनिंग दी जाती है फ्लाइट अटेंडेंट को. दे आर हैविंग दैट बेसिक नॉलेज टू डील विथ सच मेडिकल इश्यूज. एक बात आपको बताती हूँ, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट आपसे शेयर करती हूँ. द बेबीज हु आर बोर्न ऑन फ्लाइट्स, दे आर एंटाइटल्ड टू फ्लाई फ्री थ्रू आउट देयर लाइव्स. जो बच्चे फ्लाइट पे पैदा होते हैं उनको कहीं भी दुनिया में कहीं भी किसी भी प्लेन से किसी भी एयरलाइन से फ्री उड़ने का हक मिल जाता है. है ना इंटरेस्टिंग? आगे बढ़ते हैं. Corporate or private flight attendant work primarily in first class or on private jets, usually serving a smaller amount of people than on commercial flights. बहुत लोग chartered planes करते हैं. People those who can afford to have their own flights, like people like Salman Khan or celebrities, Ambani, Tata and all. So वो public के साथ travel नहीं करते हैं, तो उनके जो planes होते हैं उसमें एक smaller number of people को flight attendants जो देखते हैं वो corporate या private flight attendants की category में आते हैं. They work to provide a 5-star quality service for passengers by ordering, catering and preparing menus for guests, decorating the cabin with floral arrangements and other visually appealing decor, and stocking the cabin with unique amenities. The private flight attendants, the private flight that they work on, उसमें exclusively unique तरह का मेन्यू होगा, बहुत ही स्पेशल डेकोर होगा, and things are worked out on a much superior level. Flight attendant duties and responsibilities. You must know that if you are aspiring to become a flight attendant, which I believe you should think of, these are the responsibilities and duties you must know and understand so that you gain clarity and decide this career. Flight attendants are primarily responsible for keeping all passengers safe and ensuring that the cabin crew is capable of performing their duties properly. अगर आप flight attendant बन रहे हैं, आपकी first most primary duty होनी चाहिए passenger की safety. Comfort comes second. Do you understand? They must also try to make flight as comfortable and stress-free. This is exactly what I was telling you. So this is also a responsibility that the comfort is provided. Complete peace of mind should be there in every passenger present on that flight. This gives a very positive image of that airlines also, and image building is very important in today's time. And who is the representative of that particular airlines there?
Yes, of course, the flight attendant. Flight attendant responsibilities further include demonstrating the use of emergency and safety equipment, serving beverages, meals and snacks, providing additional assistance to passengers with special needs, reassuring passengers during aircraft turbulence, which is very common. So there is an announcement to tie the seat belts, to fasten the seat belts and not panic. Administering first aid and medical care if required in the case of an emergency, providing instructions including emergency evacuation procedure to passengers. Skills and attributes. क्या skills उनके अंदर होने चाहिए, क्या qualities, क्या उनके अंदर वो हुनर होना चाहिए जो कि बहुत यूजफुल होंगे अगर कोई व्यक्ति फ्लाइट अटेंडेंट बनने की सोच रहा है. So let's start. So the first and foremost responsibility is sense of responsibility. Why? Because you are asked, you are being told, you have been appointed by the airlines company to take care of a huge number of passengers. उन सब की ज़रूरतें, उनकी सेफ्टी आपकी कंधे पर है, आपकी जिम्मेदारी है. Pleasing personality, yes, looks do matter, and in this profession they certainly matter the most. आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अपीलिंग होनी चाहिए, प्लीजिंग होनी चाहिए. कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपके मैच होने चाहिए रिक्वायरमेंट से, वो हम आगे बात करेंगे. प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इनिशिएटिव. आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए. क्यों? क्योंकि कोई अचानक कोई प्रॉब्लम आई तो आपके हाथ पाँव ना फूल जाएं या आप घबरा ना जाएं. आपके पास वो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, थिंकिंग ऑन द फीट एबिलिटी भी इसको कहा जाता है, जिसको यूज करके आप किसी भी प्रॉब्लम का एक इफेक्टिव सोल्यूशन तुरंत की तुरंत निकाल सके. गुड फिजिक. यस, यू नीड टू हैव अ गुड स्ट्रक्चर्ड बॉडी, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ऑल इंक्लूडेड. पेशेंस टू वर्क लॉन्ग आवर्स. समटाइम्स इट्स इंटरनेशनल फ्लाइट, तो लंबे लंबे आवर्स होते हैं, हवा में आप उड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस भी होना चाहिए और आप मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए लंबी फ्लाइट्स में इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, विदाउट अ ड्रॉप इन योर परफॉर्मेंस वर्क करने के लिए. सिस्टमैटिक अप्रोच टुवर्ड्स ड्यूटी. यस, यू हैव टू बी मेथोडिकल. पहले क्या करना है, पहले क्या अनाउंसमेंट होगा, फिर कौन सी सर्विस आपको देनी है. एवरीथिंग इज ऑल स्ट्रक्चर्ड. गुड अपीयरेंस, व्हिच इज अगेन अ पार्ट ऑफ फिजिकलिटी. इंटरैक्टिव स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स. आप बात कैसे करते हैं, किसी से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. आपकी बॉडी लैंग्वेज, वर्बल और नॉन वर्बल, बोथ शुड बी परफेक्ट. प्लेजेंट टू टॉक टू. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. जिस लैंग्वेज के एरिया में, रीजन में आपको काम मिला है, इंग्लिश हिंदी तो है ही है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल टूर पे गए हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट है आपकी, तो उस पर भी जिस जोन में आप जा रहे हैं, जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा रहे हैं, उसमें भी आपकी एक पकड़ टेस्ट होती है. आपको तभी वहाँ भेजा जाएगा जब आपको वहाँ की लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी. प्लेजेंट वॉइस. यस, यू हैव टू हैव सूदिंग एंड प्लेजेंट वॉइस. टीम स्पिरिट. You have to work with other cabin crew members also, those who are working along with you. So, of course, you need to be a good team player. Positive attitude. Positive attitude हर चीज़ में होना चाहिए, खाली फ्लाइट अटेंडेंट में ही क्यों. सेंस ऑफ ह्यूमर. सेंस ऑफ ह्यूमर से प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आपको जोक सुनाने को कहा जाएगा, लेकिन हाँ, सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सा आपके अंदर मुस्कुरा करके बात करना या चीज़ों को जहाँ हल्के में बोलना या बताना है, वो स्टाइल आपके अंदर होना चाहिए. Attentiveness. In addition to being attentive to passengers' need, a flight attendant needs to be aware of any safety or security risk during the flight. ये ट्रेनिंग आपको ऑलरेडी दी जाएगी कि कैसे रिस्क और पैसेंजर की सेफ्टी आपको ध्यान देनी है और रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है. Communication skills. A flight attendant needs to be an excellent communicator and an attentive listener. मैं हमेशा अपने करियर काउंसलिंग सेशंस में एक बात ज़रूर कहती हूँ कि a good communicator is always a very good attentive listener. Customer service skills. It's all about passenger. Passenger कौन है आपका? आपका वो customer है. A flight attendant needs to be able to handle stressful situations with tact and resourcefulness. मैं आपको एक बात बताती हूँ. आप फ्लाइट अटेंडेंट मान लीजिए हैं, इमेजिन करके देखिए, आप अच्छे मूड में हैं, आप कूल एंड कंपोज्ड हैं. एक पैसेंजर आया है जिसके ऑफिस में डील नहीं हुई है, वो अपसेट है, या घर से कोई लड़ झगड़ के आया है, वो बहुत प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है और वो बहुत
कंफर्टेबली या बहुत डिसेंटली बात नहीं कर रहा है, थोड़ा इरिटेटेड है, एजिटेटेड है, फ्रस्ट्रेशन उसका दिख रहा है, आप रिएक्ट नहीं कर सकते हैं उसी के स्टाइल में. यू नीड टू बी कंपोज्ड एंड एट द सेम टाइम इंश्योर कि सामने वाला भी आपसे बात करके थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा सा स्केल डाउन हो जाए. ये एक स्किल है जो आपके अंदर होनी चाहिए. कैसे एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी आपको अपना आपा नहीं खोना है, अपने आप को शांत रखना है. Decision making skills. A flight attendant must be able to make important decisions quickly in case of emergencies. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. Thinking on the feet ability कहते हैं इस क्वालिटी को. अचानक से कोई प्रॉब्लम आई और उसमें आपके हाथ पांव नहीं खुलने हैं, तुरंत से तुरंत आपको समझदारी से बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकालना है. फिजिकल स्टैमिना, जैसे कि लंबे वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, यू मस्ट हैव गुड फिजिकल स्टेमिना. कई बार आपको लगेज उठा करके रखना होता है, ओवरहेड कैबिन जो बिन्स होते हैं, या हैव टू कीप वॉकिंग और स्टैंड फॉर लॉन्ग आवर्स. ये सब चीज़ें आपको अपने अंदर लानी होंगी. अपना स्टेमिना एनहांस करना ही पड़ेगा इफ यू आर विलिंग टू बिकम अ फ्लाइट अटेंडेंट. What is the eligibility criteria? Let's understand that also. Mastery in spoken English and other foreign languages as required. हिंदी के अलावा आपको इंग्लिश में भी बहुत अच्छा कमांड हासिल होना चाहिए. And when I say English, let me give you a small tip. The first thing that is noticed is the pronunciation. अगर आपका pronunciation बहुत अच्छा है तो ग्रामर, वोकैबुलरी और फ्लुएंसी आप आराम से सीख सकते हैं. सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने में. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. Why? Because I have had the chance to work with one of the training institutes which deals with training flight attendants, aspiring flight attendants and cabin crew members. So this is where my experience comes from. 18 to 26 years of age, this is the age limit. 10 plus 2 with degree in hospitality or other graduate degree is always welcome. 10 plus 2 के बाद आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, साथ में एक ग्रेजुएशन की डिग्री या हॉस्पिटैलिटी की डिग्री always gives you an edge. Height of minimum 157.5 centimeters, weight proportionate to the height, eligible for an Indian passport. ये बहुत ज़रूरी होता है to carry your passport. The person should be unmarried in most of the cases. Perfect eyesight, good health, fair to clear complexion, no pimples, no acne, no nothing, no scars at all. This is also something one needs to take care of. 6/24 vision in each eye. There will be an initial screening followed by a written test, group discussion and personal interviews. Accepted candidates are put through necessary training in relevant procedures. Flight attendant education and training requirements. What is the training that is needed? Let's understand that. Flight attendants typically need at least 1 to 2 years of experience working in service industry before obtaining employment as a flight attendant. Here I'll give you my input. Yes, this is true that people are hired after completing 10 plus 2. However, your experience in the industry of hospitality would give you an advantage over the others who are trying to become a flight attendant. This experience may include consumer-facing positions in restaurant, hotels, resorts and sales. जो लोग इन जगहों पे काम कर चुके हैं, कौन सी जगह, रेस्टोरेंट, होटल्स, रिसोर्ट्स एंड सेल्स, उनको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलता है, उनको प्रेफरेंस मिलती है. Airlines provide initial training to a new flight attendant, and this training period can range from 3 to 6 weeks. Flight attendant training, which is required for FAA certification, typically occurs at the airline's flight training centers. Once a new flight attendant successfully completes the initial training, they receive the FAA certification of demonstrated proficiency. ट्रेनिंग के बाद एक सर्टिफिकेट भी मिलता है फ्लाइट अटेंडेंट को, जो बन रहा है फ्लाइट अटेंडेंट टू बी स्पेसिफिक. Moving ahead, flight attendant experience and requirement once again. Career advancement for flight attendant is based on seniority. It's a common trend in
corporate world. Senior flight attendants may be promoted to management positions, and they are typically responsible for scheduling, instructing, and recruiting new flight attendants. Once you have gained experience, you are promoted to a higher position, a managerial position, where it becomes your role, it becomes your responsibility to hire new flight attendants. Career scope and job prospects. Studying and skill development is a constant thing in this career, especially if you are angling for promotions. If you are aiming for promotions, you have to continue working on your skill enhancement and keep learning new things, new ideas, new knowledge, new technology related to your field. After about 10 years as an air hostess, you would be moved to jobs such as ground hostess or check hostess or other airline related jobs. Though airlines usually advertise for recruits, individuals may send in applications on their own initiative. Yes, it's a beautiful thing about this career that you do not have to wait for your turn. You do not have to go through an advertisement. You can yourself send in your resume, and since the requirement for flight attendants is very high, the chances are very bright that you may get called shortly. Top colleges, institutes for air hostess training. The names are, yes, let me repeat with a lot of pride that I have been associated with one of the top training institutes which deal with air hostess training. So, coming back to the main agenda, which is telling you the names of institutes or colleges dealing with air hostess training. Franklin Institute of Air Hostess Training, Bombay Flying Club College of Aviation, Universal Aviation Academy, Jet Airways Training Academy, Indigo Training Center, Air Hostess Academy, Indira Gandhi Institute of Aeronautics, Institute of Personality, Etiquette and Grooming, Center for Civil Aviation Training. Locations are also given along with the names of the colleges and universities. The courses which are offered in these places are airport ground service, air hostess and flight steward, aviation cargo, aviation security awareness basic, hospitality and customer services, pilot training. What kind of workplace environment one may expect if he or she is thinking of becoming a flight attendant? Individuals who pursue career as flight attendants work at nights, weekends and holidays. There is no chutti. You can be expected to work on holidays or even festivals. Attendants usually spend 65 to 90 hours in the air and 50 hours preparing planes for passengers monthly. Most airlines usually guarantee attendants at least 65 to 85 flight hours every month, usually with opportunities to work overtime. Yes, I mentioned the word overtime. However, this is very rare. Very rarely a flight attendant is asked to work overtime, because a person who is tired, who is exhausted, would not be able to look good, presentable, and at the same time would not be able to give 100% sincere and committed performance. Since the flight attendants' work is in the travel industry, a part of their job profile is to travel. Yes, of course, there is a lot of traveling involved in this profession. एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट्स, कौन कौन सी शिफ्ट्स होती जिसमें कि एक फ्लाइट अटेंडेंट को काम करना होता है? आवरली बेसिस होती है, जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट्स हैं तो वो आवरली बेसिस हो गया. Since most of the attendants are union members, they usually work set hours. Most attendants usually are limited to working 12-hour shift, but some are allowed to work 14 hours shift. Nature of employment. What is the nature of employment if you're working as a flight attendant? It's contractual. Most of the times it's contractual. You have to sign a contract with the airlines company. Companies provide contracts of 3 to 5 years to employees, which may vary from company to company. Let's now talk about the workplace. Workplace एक common sense के तहत अगर आप समझें तो मोस्टली एक फ्लाइट होती है, प्लेन के अंदर का हिस्सा आपका वर्क प्लेस होता है. अटेंडेंट्स यूजुअली फ्लाई 75 to 90 hours
a month and generally spend another 50 hours a month on the ground preparing flights, writing reports, and waiting for aircraft to arrive. So basically, it's the plane, inside of the plane, or at the airport. Both places could be considered as your workplace. Presence in geographical area, आप किस तरह के इलाके में काम करते हैं? It's so understandable. The area is urban. टाइम प्रेशर, कितना टाइम प्रेशर होता है? एक तो होता है वर्क प्रेशर, एक होता है टाइम प्रेशर. तो उसके बारे में लेट्स अंडरस्टैंड. There is a lot of time pressure on flight attendants. You have to be punctual, you have to take care of the routine, the scheduling, which should be on dot. Flight attendant working conditions are very stressful. Yeah, this is a flip side that आपको चूंकि deadlines meet करनी होती हैं, तो थोड़ा सा time constraint होता है, time का pressure होता है. लेकिन धीरे धीरे जब आप उसमें एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, आप उसमें एक तरह के हैबिचुअल हो जाते हैं, तो वो प्रेशर भी आपके ऊपर से हट जाता है. Flight attendants spend 25% of their time flying while the rest of their time preparing for the flights, writing reports and waiting for planes to arrive. Overtime details, the working hours for flight attendants are generally 75 hours to 100 hours per month. Flight attendants are required to work nights, holidays, and may spend a lot of time away from their home base. This is again a challenge. I would never say a flip side here. I would never say it's a disadvantage because किस जॉब में challenges नहीं होते हैं, तो take it as a challenge and face it bravely. तो घर से थोड़ा सा दूर रह करके you tend to feel homesick, but that's okay. However, even the odd working hours are already scheduled before, so they are only required to work as per their allotted time and not overtime. मैं पहले भी आपको यही बात बता रही थी कि overtime नहीं कराया जाता है flight attendant से, keeping in mind कि उनकी work performance की जो quality है वो deteriorate हो जाएगी अगर उनसे overtime कराया गया. तो everything is pre-planned and scheduled, so the mental preparation is much intact. Weekly hours of work, minimum 12 hours. The career of a flight attendant comes with a certain day shift, which is usually between 12 to 14 hours on a daily basis. Career path progression. भाई हम flight attendant बन गए, उसके बाद क्या? What is next? आप शुरुआत करते हैं एक cabin crew से. तो पहला जो मैंने mention किया है, that is the information about a cabin crew. A cabin crew member on a boarding plane is assigned with several tasks and responsibilities that involve attending staff meetings about flight schedules and route. हम अब तक यही सब पढ़ भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं. A cabin crew member is responsible for checking supplies on the plane and ensuring emergency equipment is functioning properly, efficiently. On flight, cabin crew members are responsible for ensuring that passengers are comfortable during their flight journey. आगे बढ़ करके एक कैबिन क्रू क्या बन सकता है, आगे चल के उसका क्या प्रोग्रेशन होगा जॉब में. अ कैबिन क्रू ट्रेनर is also known as cabin crew instructor. So you can move ahead to become a cabin crew trainer. पहले आपने ट्रेनिंग लेकर के फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब करी और आप एक्सपीरियंस्ड हो गए, आपको नॉलेज आ गई, आपको स्किल आपने डेवलप किए और आप खुद एक ट्रेनर बन जाएंगे जो होने वाले फ्लाइट अटेंडेंट्स को ट्रेनिंग देगा. A cabin crew instructor is responsible for providing accurate training to cabin crew staff to manage the passengers' requirements and ensuring that they stay comfortable throughout on-air journey. Agla progression, cabin crew supervisor. A cabin crew supervisor oversees the cabin crew team members and ensures that they are briefed about their work responsibilities prior to the flight. सुपरवाइजर से ही समझ में आ जाता है कि वो एक सीनियर पोजीशन पे काम करेगा और उसके अंडर एक कैबिन क्रू की पूरी टीम काम करेगी. तो सारे इंस्ट्रक्शंस देना, सारी ब्रीफिंग देना, काम कैसे करना है, किस स्टाइल में करना है, किस नेचर में काम करना है, वो सारा काम एक सुपरवाइजर करता है. कैबिन क्रू सुपरवाइजर, आई एम एम्फसाइजिंग. He or she is responsible for ensuring that there is no communication gap between cabin crew members and management to avoid any mismanagement on board flight or any other delay. Career path, आगे बढ़ते हुए cabin crew head. A cabin crew head is also known as chief purser. He or she is responsible for managing the cabin crew staff to meet needs of passengers. A cabin crew head ensures accurate security and safety procedures are observed. ये उसकी responsibility है कि वो ensure कराए कि पूरी safety और security measures in line है, कुछ भी missing नहीं है.
He also oversees food and drinks served in the right manner in the flight. Salaries की बात करते हैं. After all, we work for the sake of earning money. And air hostess get, and those monthly salaries also, I'm only talking about the average salaries here. So the average could be somewhere around 30,000 a month. Junior level pay, it is 20,000. Senior level pay, it can go up to 50,000 rupees a month. सैलरी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपसे बताना चाहूंगी. द सैलरी ऑफ अ कैबिन क्रू वेरीज डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स स्पेंट ऑन फ्लाइट, द एयरलाइंस दैट यू आर वर्किंग फॉर विद एंड द सीनियरिटी इन द एयरलाइंस. आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, आप किस एयरलाइंस के संग जुड़े हुए हैं और आप किस पोस्ट पे हैं, आपकी सीनियरिटी कितनी है. An entry level candidate can expect an average cabin crew salary of rupees 25,000 per month. So it could be 20,000 or 25,000. As I have been emphasizing enough, I'm only talking about the average structure. Moving ahead, recruiter. कौन recruiter हो सकता है cabin crew member का? Air India Limited है और भी private airlines हैं. Monthly salaries यहाँ पे क्या हो सकती है? Average could be 40,000, junior level 25,000 and senior level could go up to 65,000 rupees a month. कैबिन क्रू सुपरवाइजर के बारे में अगर हम बात करें तो उसका रिक्रूटर कौन हो सकता है? एयर इंडिया लिमिटेड, इंडिगो, विस्तारा, टाटा, एसआई एयरलाइंस लिमिटेड. मंथली सैलरीज उनकी कैसे हम समझेंगे? एवरेज कुड बी समवेयर अराउंड 50,000 rupees a month. Junior level pay, it is 40,000 rupees. Senior level can go up to 75,000 rupees a month. The cabin crew supervisor's salary again varies on airline and experience. कौन सी एयरलाइंस है और आपने कितना एक्सपीरियंस लिया हुआ है उस पर भी डिपेंड करती है आपकी सैलरी. एन एंट्री लेवल कैबिन क्रू सुपरवाइजर कैन अर्न एनीथिंग बिटवीन 4 lakhs to 5 lakh rupees. A senior level cabin crew supervisor earns an average salary of rupees 9 lakhs to 10 lakh rupees per annum. I think the salary, the structure of your earning is very good here. All you need to do is work on your communication skills, public speaking skills, your confidence, your personality, your grooming. Cabin crew head. Who could be the recruiter for you? Vistara, Tata SIA Airlines Limited, Indigo, Qatar Airways, Air India Limited. Monthly salaries average can start from 90,000 rupees. Junior level, it is 65,000 rupees and above. Senior level can go up to 1,25,000 rupees a month. Questions related to flight attendants. One may think that you could have certain doubts. So to remove those doubts, I have framed some questions and tried to answer those questions also so that you get a clear picture of this career. Question is, how long does it take to become a flight attendant? So answer would be, new flight attendant typically receive paid training after being hired by an airline, but flight attendant school to train aspiring candidates do exist and some choose to pay for their own training before seeking a job. Training programs can take up to 8 weeks to complete. मिनिमम 8 वीक्स है, ये भी बताना मुझे ज़रूरी लगता है आपको. और आपको एक तो आपको हायरिंग के बाद वो ट्रेनिंग देंगे ही देंगे, लेकिन कुछ लोग पहले से ही ट्रेन होके जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल क्योंकि आपकी फिर हायरिंग चांसेस बढ़ जाती हैं. Is a flight attendant costume different from different airlines? Yes, of course, it is different. Every airline has got a different type of uniform a flight attendant has to don. How much does a flight attendant make in India? हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. What is the difference between stewardess and flight attendant? ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था कि the term stewardess and flight attendant describe the same basic job of tending to airplane passengers needs and safety. ये खाली शब्दों का फर्क है, job responsibility और meaning same है बिल्कुल. Stewardess, however, is an outdated term that has been replaced by a flight attendant on all airlines. Stewardess पहले बोला करते थे, फिर air hostess भी अब outdated हो गया. आजकल ज़्यादातर cabin crew या flight attendant ही बोला जाता है. सैलरी के बारे में हम लोग फिर से समझ लेते हैं. यहाँ पर इंटरनेशनल एयरलाइंस पे बेटर देन डोमेस्टिक एयरलाइंस. ये स्लाइड मैंने डाली इसलिए ताकि आप समझ पाएं. हमने डोमेस्टिक के बारे में बात कर ली, लेकिन इंटरनेशनल के बारे में भी यू मस्ट नो. सो international airlines pay better than domestic ones, but even domestic air hostesses earn about somewhere
from 25,000 to 40,000 rupees a month. In senior positions, you can be paid up to 50,000 to 75,000 in domestic airlines. Private airlines might pay you rupees 2 lakhs a month. End of this session has come, and I'm very positive, I'm very confident that by now many of you may have already made up your mind to think about this career and start working on your personality and look for training institutes. Yes, always remember one thing about this job: for most people the sky is the limit. For flight attendants, sky is the home. Isn't that beautiful? On this beautiful thought, I'll leave you today. See you soon next time. Till then, take care. Bye-bye. Thank you.